हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं सौम्या कंडारी मैम, जो कि वॉलमार्ट में प्लेस्ड हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार और बहुत कुछ सिखाने वाला होगा। तो वीडियो की एंड तक बने रहना और बिना वक्त ज़ाया करे वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें। So first of all, thank you so much, Utkarsh, for having me on your channel. Hi everyone, my name is Soumya Kandari. I am a final year student at ABES Engineering College, and currently I am working as a ST intern at Walmart. ओके, तो मैम एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जब आप कॉलेज में एंट्री ले रही थी, यानी आपके फर्स्ट ईयर में, तो आपका माइंडसेट कैसा था कि मतलब कौन कौन सी कंपनीज को टारगेट करना है, कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, ऐसा कुछ जो आपका एकदम फर्स्ट ईयर माइंडसेट था? क्योंकि ये वीडियो हर ईयर के लोग देखेंगे, तो मैं चाहूंगा कि ये पूरा आप ऐसे एक्सप्लेन कर दो। टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे कौन सी कंपनीज को टारगेट करना है एंड व्हाट इज ऑल द प्लेसमेंट स्ट्रेटजी आई हैव टू फॉलो सिंस आई एम इन ईसी ब्रांच में कोर्स आई एम इन कोर ब्रांच आई एम नॉट इन सीएस एंड आईटी सो मेरे को तो बिल्कुल आइडिया नहीं था वेदर आई शुड गो इन गवर्नमेंट सर्विसेज शुड आई प्रिपेयर फॉर गेट और शुड आई प्रिपेयर फॉर आईटी सेक्टर. So first year में I was like kind of lost. I didn't know what to do. But like later on when I got into second year, I know that yeah, my interest is more into IT than in core. So with time, I segregated my interests. Yeah. ओके, तो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स प्लेसमेंट के लिए क्या क्या होती हैं? Hmm. So if you're talking about Walmart, let's first talk about basic requirements for a placement. Like if you're targeting on campus, so you should be well versed with all the core fundamentals. क्योंकि मोस्टली जो आपके ऑन कैंपस से आपकी कंपनीज आती हैं दे यूजुअली हैव वन इंटरव्यू राउंड तो ज्यादा उसमें दे फोकस ऑन क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऊप्स या फिर डीबीएम्स के क्वेश्चन या सीएस के क्वेश्चन वगैरह सीएस फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस. अदर देन दैट मेक श्योर यू हैव गुड नॉलेज ऑफ डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. वो बहुत अच्छे से आना चाहिए एंड सम टॉपिक्स लाइक डीपी ग्राफ्स एंड ट्रीज they are very helpful if you're targeting good package companies. Like for product based companies, if you are very good at these topics, I think you should crack it. You should be able to crack the companies. And talking about Walmart, if you are targeting Walmart as your dream company and if you want to grab a job at Walmart, basic criteria is like be very good at oops. Like in my interview, मेरे interview में oops पे बहुत ज़्यादा discussion हुआ था. They don't mainly focus on your coding skills. They want you to be an all-rounder. तुम्हें सब आना चाहिए, तुम्हें कोर फंडामेंटल्स भी पता होने चाहिए कि हाँ भाई oops में क्या होता है, कैसे implement कर रहे हो लैंग्वेज को अपनी, उस क्लासेस कैसे बना रहे हो and what is multi-threading and some terminologies related to that. And क्या coding तो of course it's mandatory if you're targeting a product-based company. Yeah. ओके, सो मैम बेसिकली अगर आपको वॉलमार्ट टारगेट करना है तो आपका ऊप स्ट्रांग होना चाहिए, डीएसए स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? Yes. That's ओके, right. तो मैम जैसे आपने बोला कि इंटरव्यू राउंड में ऊप्स वगैरह चीज़ें पूछी, तो अगर हम सिर्फ इंटरव्यू की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में? Yeah, I think communication skills are very important when you're targeting or when you're going into an interview because you have to explain your perspective to them. तुम्हें अपना solution बताना होता है and they always motivate you to think out loud. Like whenever you're coding or be it a technical interview or an HR interview, your communication skills, like I think, plays the most important part. You have to think out loud whatever you're thinking, whatever solution you're implementing. You have to tell them step by step that see this is where my approach is. I am thinking about this, and most importantly, many companies have HR round. So in HR round, they will ask you questions related to behavioral activities like working in a team, or they will give you some scenarios where you have to come up with a solution that well suited their company values and ethics. तो वहां पे योर कम्युनिकेशन स्किल्स प्लेज अ वेरी गुड पार्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रियली गुड एट कोडिंग बट तुम अच्छे से बता नहीं पा रहे हो, अपना सोल्यूशन समझा नहीं पा रहे हो इंटरव्यूअर को, तो दैट इज down the line it's wasted, right? And other hand, if you're like okay, you're okay in coding but you're very good at communication skills, you're able to explain each and every step कि मैंने ये किया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये एल्गोरिथम है, ऐसे ऐसे हम अप्रोच कर रहे हैं, तो इंटरव्यूअर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है. He knows that yeah, this guy is very good at communication, मुझे अच्छे से समझा पा रहा है, so yeah, they will probably give you a brand. ओके, सो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपकी Yeah, बात समझाने के लिए, इंटरव्यूअर को मनाने के लिए एक तरीके से, कि yeah, हाँ मुझे definitely. आता है, ऐसे करके। Mm. और मैम अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे डिस्कस करें कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स आपने लिए, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आपने करी, तो वो थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन। Sure. So, since I told you, like, कि मैं EC branch से हूँ, I'm not in CS or IT. So, first year, I would suggest to all the people who are in first year, I would suggest go on explore all your interests. जो भी आपके interest है, explore करो because there's no hustle in first year. Like, you don't have to rush anything. Take it slow and build up your interests. See what really works for you, what language really works for you. There are plenty of languages out there, and you have to choose one language. You have to stick to one language. So I would suggest you ki, during your first year, explore all your interests, whether you are interested in web development or Android studios or like something or blockchain. So make sure you explore all the interests so that in second year you can pick up with that and you can continue your journey towards it. So first year may explore things, second year may start coding like regressive coding and constant consistent रहना चाहिए whenever you are coding. Don't do like this कि like 3 दिन मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए उसके बाद एक हफ्ता मैंने कुछ नहीं करा. Don't do that. I would suggest कि चाहे तुम दिन में एक क्वेश्चन भी ना करो but like do it every day because your consistency over a long period of time will make up with a great effect and great results. So second year may do coding on lead code, GFG. If you're good at competitive, if you have interest in competitive programming, go for it. If you're in second year, I think doing competitive programming will surely give you an upper hand. It will help you in your final year when placement season is going on because definitely when you're doing CP, I think your problem solving skills are really top notch, and yeah, it really helps you improve that. So second year may make sure you do coding, make sure you have good basic knowledge of all the data structure and algorithm. अरे data structure को अच्छे से पढ़ो, सारे कोई भी एक टॉपिक मत छोड़ना क्योंकि सेकंड ईयर है. You can take it slow, but like yeah, make sure you have strong base. In third year, you have to make some of the project because ultimately fourth year में resume में add करना होता है. So make some personal projects जो भी आपके इंटरेस्ट है, add those, create those, and participate in hackathons. Like I would like to really emphasize on this point, like participate in hackathons. If you have some of the hackathons finalist position in your resume, it really helps you gain some good brownie points. So yeah, during your interviewer might discuss about it, like yeah, just tell me about this hackathon, what did you do, what was the solution. So थोड़ा time span तुम्हारे interview का discussion में निकल जाता है. So it's a very good thing if you have hackathons. There are a lot of hackathons going on. You can check some of the coding websites and they have like Hacker Earth हो गया, Dare to Compete पे भी बहुत सारे hackathons आते रहते हैं, तो उनको check करते रहो. Third year में like it's like project and your hackathon. It's like building up your good resume so that you can easily be shortlisted. And in fourth year, yeah, just do smart work. Since over the three period of 3 years, you have already done a lot of things. So I would suggest fourth year may take it slow, but like do smart work rather than hard work. You've already done the hard work in the previous 3 years. So fourth year may go for like specific preparation according to the company. So if you're targeting Amazon, you should prepare according to Amazon. Go on websites like Geek for Geeks, check all the archives related to Amazon, prepare according to that. So yeah, that's the I think one good strategy to crack good placement. Nice. तो आपके अकॉर्डिंग मैम फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, चिल रहो. Yeah. सेकेंड ईयर Right. में कोडिंग स्टार्ट कर दो, कंसिस्टेंट रहो. बेसिकली सेकेंड ईयर इज़ फॉर Mhm. कंसिस्टेंसी. और अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो प्रोजेक्ट्स, हैकेथॉन्स, और फिर फोर्थ ईयर में सब कुछ कंपाइल करके उसको बस प्रेजेंट Exactly. करना है. ओके. Mhm. तो मैम अगर कुछ हैकेथॉन्स के आप नाम लेना चाहें जो आपने पार्टिसिपेट वगैरह कराओ. Yeah, I participated in a lot of hackathons. So one of them were Mintra Hackathon. So it was, I think, I participated in that in my third year, and मैं shortlist भी हुई थी second round के लिए. Since it was my first hackathon, I didn't have much of knowledge और इतना मेरे पास experience नहीं था. But still, it was a very good experience overall. I got to learn a lot of new technologies and how basically a hackathon works. Other than that, it's a smart in the hackathon. It happens. So I think already in our college it has happened. So you can participate whenever you are in third year. And agar Smart India Hackathon ko you have a mention in your resume, so it's a very good thing. They'll ask you like, oh, it's a very well-known hackathon overall over the all the country. And apart from that, there are a lot of other hackathons on. You can check on Dare to Compete or Hacker Earth.
Yeah. Okay. Smart India Hackathon, and what other, ma'am, that you cited? There's Mintra Hackathon or it's Uber Mintra Tag. Hackathon. Like there's a lot of companies, having those hackathons. बहुत सारी companies अपने hackathons निकालती रहती है, तो make sure to check those out. ओके। तो Yeah. मैम, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो जाहिर सी बात है, जब हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं तो चैलेंजेस आते ही आते हैं, प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। तो उन कुछ चैलेंजेस के बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहें तो। Like challenges are the must. So the biggest challenge I faced during my preparation, during my placement season when I was preparing for the placements, is like lack of motivation. There were days where I was highly motivated, where I would solve around 10 to 20 questions and then do all the things and a lot of things. But फिर उसके बाद, towards the end of the week, I feel demotivated. So you should have something to motivate you, be it your friend circle, be it your inner voice or whatever. Motivation lack बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है fourth year में. Also, when you are sitting on some company interviews and you're not tracking it, you feel so a little demotivated. Like, oh God, other people cracked it and I was not able to crack those. So don't belittle yourself. Don't think lowly of yourself. You can crack it. Other mistakes what I did was like I took a lot of time to decide my language. So I did coding in Java, but before that I was stuck in Python. I don't know why during lockdown I just because I think I was in my second year, so I started coding and I started coding in Python. I don't know why I wanted to be jack of all. I मुझे सब करना था, तो मैंने Python start कर दी. मेरे उसमें भी था curriculum में, तो मैंने Python से coding start करा. But something was off with me and that language. और फिर उसके बाद मैंने 4 महीने उसमें लगाए. 4 महीने का मुझे लगा नहीं यार, मुझे इसके कौन से समझ नहीं आ रहे हैं. I don't like this language. मतलब इतना connect नहीं बैठ पा रहा है. And then I switched to Java. And once I switched to Java, I was like, okay, this is like kind of my thing. And like then I continued with Java. 4 महीने मैंने उसमें waste कर दिया because मैंने first year में नहीं सोचा था कि मेरे को कौन सी लैंग्वेज पिकअप करनी है. So these were the two mistakes I did. And apart from that, I think these are the two mistakes I can think of right now. ओके। तो मैम, आपने जैसे अभी बोला कि जब और लोगों का इंटरव्यू निकल रहा था और लोग का प्लेसमेंट हो रहा था तो थोड़ा आपने डीमोटिवेटेड फील किया। तो Uh, उस टाइम पे, मतलब जब ऐसा फेज होता है तो मुश्किल होती है थोड़ा हैंडल करने में अपने आप को। तो उस टाइम पे आपने कैसे हैंडल करा अपने आप को? मतलब हैंडल करने वाली की बात नहीं थी. इट्स लाइक एवरीवन हैज देयर ओन जर्नी. हो सकता है कि किसी का आज अच्छी कंपनी में लग रहा है, बट दैट डजंट मीन कि तुम्हारा कभी नहीं लगेगा. एवरीवन हैज देयर ओन जर्नी. सो आई टुक इट एज अ वेरी हेल्दी कंपटीशन एंड हेल्दी मोटिवेशन फैक्टर. I got inspired from them. I learned through my mistakes. That is very important. Like अगर तुम इंटरव्यूज में जा रहे हो और उसके बाद भी तुम अगर even if you're getting rejected and you're not learning something from it, that means failure for you. But if you are getting rejected and you're still learning something from it, that is an experience. That is an experience for you. You're not totally failed at it. At least you learned something from it. So मैंने उसमें से ये किया, जो भी अगर मैं कोई भी इंटरव्यूज अगर आई एम रिजेक्टेड फ्रॉम देम, सो I took a lesson from it and I think ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाई थी उस टाइम पे, मैं दोबारा करूंगी घर जाके and I will write them out. अपने जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, if they are tracking good placements, I took inspiration from them. I took help from them. I took their experiences, like how did you apply it and what was your strategy. Same question that you're asking me, I asked them. So I take their interview experience and then indulge it with mine. Yeah. इट्स वेरी नाइस। मैम, जैसे आपके जो फ्रेंड सर्कल था, आपके जो Mhm. बैचमेट्स थे, कॉलीग्स थे, वो कितना Mhm. मैटर कर रहे थे आपकी प्रिपरेशन में? मतलब हेल्पफुल थे या थोड़े कॉम्पिटिटिव थे? हाँ बहुत. लाइक आई थिंक तुम्हारी जो सराउंडिंग है, दैट really matters a lot whenever you are going forward in your career, be it in your career or personal life. Your friend circle or the people you surround yourself with really matters the most. There's a saying that you're the average of the 5 people you hang out with. That means if you hang out with 5 people who are lazy, procrastinator, they're not motivated in life, you're gonna be the 6th person. You're gonna have those qualities in you, intentionally, not intentionally, but like indirectly, you'll be the laziest person in that group because you're surrounding yourself with people like that. So I'm very very choosy whenever I make friends. It's not like I really direct, I really go for कि मुझे बस अच्छे अच्छे दोस्त बनाने हैं, ऐसा नहीं है. It's like I choose people who are wise. I make friends with them.
and be very जो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में अगर everyone is motivated, you're also motivated. So that's what I say. कि जब मैं अगर demotivated रहती थी तो मेरा जो friend circle था, I by God's grace I have a great friend circle. So whenever I feel demotivated, my friend circle used to push me up, like yeah, you can do it. They motivated me a lot. So friend circle really matters a lot. And even during our placement season, there was no competition, like no jealousy competition. There was a healthy competition because competition ultimately push your limits. So yeah, हम लोग ऐसे कंपटीशन करते थे कि हाँ आज मैं इतने क्वेश्चन कर रही हूँ, तू कितने करेगा, तू कितने करेगी, ऐसे हम करते थे. एंड we also used to have mock interviews among ourselves. So if one of our friend has good coding skills, another one has good communication skills, so हम अपने अपने तक नहीं रखते थे skills को. We used to make sure that other people also improves his lack of skill. So we used to conduct mock interviews, we used to take interviews, and yeah, that's so that we can have that stage fright removed. That's all. मैम, तो कोई जो आपका फ्रेंड सर्कल था उनमें से आप किसी का नाम लेना चाहोगे ताकि वो ये वीडियो देख पाए? हाँ मतलब मैं I'm really proud of my friends, and I'm really proud to say that among my friend circle, two of them are placed at Amazon. It's Sakshi and Shivam. I congratulate them both. They are really hardworking people, and I think half of my success I owe to them because I have a great friend circle. So yeah, they are placed at Amazon. So yeah, I'm really happy with them. आई होप वो ये वीडियो देखेंगे जरूर. Yeah, definitely. अब मैं भेज के रहूंगी उन्हें. मैम, उसके बाद अगर हम वॉलमार्ट पे फोकस करें तो आपको कैसे पता चला इस कंपनी के बारे में? कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर था, कितने कितने राउंड्स थे, उसके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफली आप डिफाइन कर दो. Okay, so when I was in the last semester of my third year, so like I was in sixth semester, I used to check on LinkedIn for all the off-campus opportunities that I can apply on. I checked on Dare to Compete and other websites. So there was this hiring process through Walmart named Coders. It was for all the female candidates, female engineering students. So I applied on that on Dare to Compete. There was an opportunity for this. And after that, I think there were two rounds. First was an MCQ round, and second one was a coding round, purely coding round, where we have to solve two questions in 90 minutes. So after both the rounds, a shortlisted list was out. और वहाँ पे I think दो list थी, एक wait list, and the other one was shortlisted students. तो वहाँ पे थे, and the opportunity was for third year and fourth year students both. तो मैं उस time पे third year में थी, and same similarly fourth year वाले student ने भी apply किया था. So मेरा round हो गया था, and I cleared it. And then I received the mail that yeah, you will be having your interviews in Jan 2022. So by this year I will be having my interview round. So that time I think तब June July था, तो of course मेरे पास इतना सारा time था, तो मैंने कहा क्या करूँ मैं. I was practicing and I was preparing for Walmart, but what I did, I reached out to one of my seniors who already gave the interview. Since she was in fourth year, तो वो पिछले साल ही पास आउट होने वाली थी, तो उनका इंटरव्यू मुझसे पहले हो गया. सो आई रीच्ड आउट टू हर ऑन लिंक्डइन, एंड मैंने उनसे पूछा कि मैम व्हाट वाज द क्वेश्चंस आस्क्ड यू, एंड क्या मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, rather than going all out. I wanted कि मतलब आप बता दो कि मैं कौन कौन से बेसिक मेरे को फोकस करने चाहिए एरियाज. तो उन्होंने she told me like yeah, अभी currently the company is focusing more on these topics, prepare that accordingly. And I think after that I started preparing, and in October I had my interview. There were two interview rounds, both were conducted in a single day. So पहला था technical round, second was technical plus HR. First technical round we had a great discussion. One pro tip I would like to give all the students is like make sure your interview is more like a discussion. The more you make your interview more like a discussion, the more the interviewer is connected with you, the more is the engagement, and yeah, there are high chances for you for getting selected, because the interviewer is not getting bored. It's not simply ये नहीं है कि तुम कोडिंग कर रहे हो और वो चुप बैठा हुआ है. You can ask him questions, sir, is my approach correct? I'm thinking of मैं कि ऐसे ये data structure use कर सकती हूँ. Make sure you connect with the interviewer, you ask him frequent questions, all the queries. So जितना अच्छा डिस्कशन होगा इंटरव्यू में, उतना तुम्हारा चांसेस ज्यादा है. और ऑफ कोर्स यू हैव टू कोड द होल क्वेश्चन आउट टू बी सिलेक्टेड फॉर द सेकंड राउंड. So I think yeah. Next was the HR round, and in HR round there was the interviewer was a manager. She had 13-year plus year experience. So she asked me some technical questions and some database and
I think time complexity and algorithm question. One question they asked is like, since I'm an EC branch, so they asked like, why did you choose IT, or like you're an EC, you can go for core branches. So what makes you feel interested in this branch, in this sector? So मैंने उनको बताया reasons. So they were like pretty impressed because they were pretty impressed by my skills since I was not in core CS branches. So like, yeah, you have good knowledge on these subjects, even though you don't you तुम्हारे branch में सारे subject नहीं पढ़ाए जाते, फिर भी you know good knowledge on those subjects. तो ये था, and I think मेरे को result उसी रात को आ गया था जिस दिन मेरा interview था. So that's what all about it. ओके, तो मैम इसका जो इंटरव्यू हुआ था वो वर्चुअली हुआ होगा या ऑफलाइन था? हाँ, virtually हुआ था Google Meet पे. गूगल मीट पे। तो अगर ऑफलाइन होता तो कुछ चेंजेस होते या सही है, मतलब सिमिलर ही? ऑफलाइन होता तो पहले तो टाइम पे पहुंचो, फिर उसके बाद नर्वसनेस, यू हैव टू मेक श्योर योर बॉडी लैंग्वेज इज करेक्ट, क्योंकि जब तुम्हारा इन पर्सन इंटरव्यू होता है, सो यू आर बीइंग नॉट ओनली जज्ड बाय योर स्किल्स बट हाउ यू ड्रेस अप, योर होल पर्सनालिटी इज बीइंग जज्ड. तो हमारा बॉडी लैंग्वेज रियली मैटर्स अ लॉट. और कंफर्ट प्रेशर होता है बच्चे पे, लाइक ओ गॉड, बाहर और कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और मुझे अंदर जाना है, एंड दे लाइक इट्स क्वाइट इंटिमिडेटिंग. बट या, pros of virtual interviews is like, yeah, you have the comfort of your home, you can give whenever you want, kabhi bhi tum reschedule ho sakta hai. So aur time ka to koi dikkat hi nahi, you are never late for interviews. So like, or if there is any technical issue, you can ask the interviewer about it ki yeah, thoda reschedule kar dijiye, mera technical issue aa gaya hai, something like that. So pros of virtual interview. तो मैम जब आपका प्लेसमेंट सीजन चल रहा था, मतलब अराउंड 5th सेम से स्टार्ट अगर बात करें, 5th 6th सेम, तो आपका क्या रूटीन था? मतलब क्योंकि क्लासेस भी होती होंगी उससे, उस क्लासेस के साथ, और आप तो ईसी ब्रांच में, मतलब बेसिकली पढ़ना इसी का भी है और उसके साथ वो मैनेज करना है, तो वो कैसे मैनेज करा? क्योंकि मैं खुद इसी से हूँ। तो मेरी फैकल्टी मुझे मार डालेगी, तो मैं तो क्लासेस ज्यादा अटेंड नहीं करती थी. इसी की तो नहीं करती थी मैं, बिकॉज आई न्यू कि ऑफ कोर्स मुझे आईटी सेक्टर में जाना है, तो आई हैव टू सैक्रिफाइस वन थिंग. तो मैं इसी की आई थिंक ठीक है, अटेंडेंस बराबर ले ली, क्लास ज्वाइन करके छोड़ दिया साइड में, और साइड में कोडिंग चल रही है, कोई ज्यादा ध्यान नहीं, पर असाइनमेंट्स टाइम पे कंप्लीट कर देना, क्योंकि इंटरनल्स आल्सो मैटर्स. तो ज्यादा मैं इसी पे ज्यादा ध्यान तो देती नहीं थी, बस लाइक इतने कि हाँ भाई, अच्छे गुड अमाउंट ऑफ मेरे मार्क्स आ जाए, पास 1 लाख, एंड देन आई फोकस्ड ऑन कोडिंग. एंड रूटीन ये रहता था कि मैं डेली आई मेक श्योर कि आई एम कंसिस्टेंट ओवर द टाइम, मैं डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ, एंड आई हैव अ प्लान फॉर द वीक. ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, बिकॉज यू नो टाइम मैनेजमेंट शुड बी देयर. तो मेरे पास टाइम भी कम है, तो आई कंपनीज आई जा रही है, तो प्लेसमेंट सीजन पे एक तो ये होता है कि बहुत सारी कंपनी आ जाती है, और तुम्हारे पास प्रिपरेशन का टाइम होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि तुम एक एक दिन में दो दो पेपर दे रहे हो कंपनीज के. तो सुबह सुबह जाके पहले, सबसे पहले आई हैव टू चेक माई ईमेल्स, क्या क्या कंपनीज आई हैं, रजिस्टर करो, ये सब करो. देन आई हैव टू गिव सम एग्जामिनेशन, अगर कंपनी के एग्जामिनेशन है. अदर देन दैट, मैं यूजुअली रात में पढ़ती थी, क्योंकि मुझे ज्यादा रात, आई एम अ नाइट आउल, तो मैं रात में कोडिंग कर रही हूँ. और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ हम तो डेली मॉक इंटरव्यू ले लेते थे. एक तो ये हमारा गेट टुगेदर हो जाता था इससे, और इंटरव्यू भी ले लेते थे कि हाँ भाई, तेरी क्या प्रैक्टिस है, मेरी क्या प्रैक्टिस है, एंड या वर्क ऑन दिस वन एंड वर्क ऑन दैट. तो या यही रहता था रोज का मेरा. ओके मैम, मान लीजिए अगर आप कोविड नहीं आया होता और आप थर्ड ईयर में ऑफलाइन क्लासेस, जो कि इस समय का थर्ड ईयर अटेंड कर रहा है, हाँ, तो मैनेजमेंट में कैसे, क्या क्या फर्क होता? बहुत फर्क होता है. आई थिंक आई एम लकी इनफ कि मेरा ये जो थर्ड ईयर है वो कोविड में गया है. पीपल आर लाइक हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए, बट आई एम लाइक या, लॉकडाउन इज वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स, लाइक इफ यू यूज इट वाइजली. बट अभी जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, आई नो इट्स वेरी हेक्टिक फॉर यू गाइस, क्योंकि तुम लोगों को भी ऑफलाइन क्लासेस देनी पड़ रही हैं, और अटेंडेंस तो हमारा कॉलेज तो नहीं करता अटेंडेंस में इतनी छूट की, नहीं तुम्हें लेना ही पड़ेगा, और आके थक भी जाते हो. तो वन थिंग आई वुड से इज लाइक कि स्टार्टिंग की क्लास तुम्हारा जो अटेंडेंस ना बिल्कुल ही मत लो, मतलब इफ यू कैन लैब्स के टाइम पे अगर तुम लोग थोड़ा बंक बंक कर सकते हो, लाइक यू नो मैनेज योर क्लासेस अकॉर्डिंगली, मेक श्योर 75% है, और इवन 70 भी चलेगा, लाइक इतना ग्रेस आई थिंक 5% मिल जाता है. बट डू वन कोडिंग क्वेश्चन एवरी डे, एंड अगर तुम ग्रुप स्टडी कर सकते हो तो दैट्स आल्सो वेरी गुड, बिकॉज इफ यू आर इन कॉलेज, यू नो हॉस्टल में तो हो ही जाती है बैठक, और तुम लोग गप्पे तो मारते रहते हो, तो इससे बेटर है यू कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस, एंड मेक श्योर यू हैव वन पीयर प्रोग्रामर और पीयर कोडर. लाइक होता है ना कि
ही इज माय प्रोग्रामिंग पार्टनर. सो प्रोग्रामिंग पार्टनर इज बेसिकली कि अच्छा मैं रोज पूछूंगा तुझसे कि तूने कितने क्वेश्चन पूछे, एंड यू विल आस्क मी अबाउट माय प्रोग्रेस. सो यू बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी अदर पर्सन्स इम्प्रूवमेंट. ऐसे करो एंड फॉर दैट. ओ माय गॉड, सॉरी दाद आ गए थे. हाँ, तो यू कैन डू दैट एंड या असाइनमेंट्स वगैरह कर लो, पर लाइक मेक श्योर कि कॉलेज का काम ना कॉलेज आवर्स में खत्म हो जाए. 1 4:30 के बाद जस्ट फुली डेडिकेट योरसेल्फ टू कोडिंग. अगर तुम रोज 2 या 3 घंटे भी देते हो ना, आई थिंक इट्स वेल एंड गुड, वेल इनफ. आई थिंक बस बीट की 2 3 घंटे बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ. ऐसा नहीं है कि बस काम चोरी के लिए कर दिया. ओके मैम, आपकी क्लासेस ऑनलाइन हुई थी, उस टाइम पे कोविड था, हम्म. तो ये होता है ना कि जब क्लासेस ऑनलाइन चल रही होती हैं तो हमारा मतलब लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, हाँ, डिस्ट्रैक्शंस, यार एग्जैक्टली. तो मतलब वो क्लासेस चल वो रही कैसे है, वो स्क्रैप्स कैसे कर रहे मैनेज हैं. करा? व्हाट आई डिड, मैंने अपनी डिस्ट्रैक्शन हटा दी पहले. तो आई एम टेलिंग यू ना कि मैं इंस्टाग्राम, आई डोंट यूज इंस्टाग्राम नाउ बिकॉज मैं बहुत एडिक्टिव थी इंस्टाग्राम से. मुझे 5 मिनट का ब्रेक मिला है ना, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रही हूँ, पता नहीं क्यों. तो आई टुक लाइक कि ठीक है, इंस्टाग्राम ही नहीं होगा तो क्या चलाऊंगी, तो टाइम तो कुछ बचेगा. देन व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू मेंटेन अ प्लानर. उस प्लानर में क्या होता था, मैं अपना वीकली का वो टास्क दे देती थी अपने आप को कि सौम्य यू हैव दिस चैलेंज. मैं तुम्हें चैलेंज, मैं खुद को ही चैलेंज देती कि इस हफ्ते तक इतने क्वेश्चन हो जाने चाहिए, और लीड कोड पे इतने क्वेश्चन और इतने इतने पॉइंट्स मिल जाने चाहिए. मतलब एक स्ट्रैटेजी बना देती थी कि ये मुझे करना ही है. अब चाहे मुझे ये हफ्ते के लास्ट दिन में मेहनत करके करना पड़े या थ्रू आउट द हफ्ता. तो व्हाट आई रोज सुबह टू डू लिस्ट बनाती थी कि हाँ आज ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है. एंड गिटहब पे मैं ऐसे रिपोजिटरी बना देती थी. वो अच्छा लगता है ना कि तब तुम्हारे वो सारे ग्रीन ग्रीन दिखते हैं कि हाँ भाई कंसिस्टेंसी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था. तो मैं कि हाँ रोज मुझे गिटहब पे एक एक क्वेश्चन करके सॉल्यूशन उसका डालना है. तो दैट इज कंसिस्टेंसी एंड वो अच्छा लगता था कि हाँ पूरा अच्छा बना हुआ है, तो मैं फोटो खींच के रखती थी. ओके, दैट्स वेरी नाइस। या आपने गिटहब की बात कर ली है, तो गिटहब और लिंक्डइन प्रोफाइल ये कितना इम्पोर्टेंट है प्लेसमेंट वगैरह के लिए? no, GitHub तो ज्यादा important नहीं है. Like if you are in development side and you want to go for open source contribution, yeah, GitHub is very necessary. GitHub आना चाहिए, basic GitHub, how to make pull request and GitHub request कैसे करते हैं. But LinkedIn, I think if you are in third year, it's high time create one LinkedIn profile, क्योंकि वहां पे ना बहुत opportunities आती है. You never know, and अगर you have good connections ना, you can reach out to HRs and वहाँ पे वो directly referral भी देते हैं. You can ask for referrals and you can follow your all the people that are already working in your dream company. So if your dream company is Google, follow all those software engineers. क्या पता तुम्हें एक दिन उनसे बात करने का मिल जाए. You can talk to them कि yeah sir, I'm very interested. I got multiple DMs in my LinkedIn. They ask about my preparation, interview experiences. So you can also ask other people who are already placed in good companies. तो वो तुम्हें आराम से बताएंगे. It's a very helpful community. वहाँ पे HRs अपनी अपॉर्चुनिटी डालते रहते हैं कि या देयर इज दिस ओपनिंग, इफ एनीवन वांट्स टू अप्लाई डीएम मी फॉर रेफरल, और देयर इज दिस competition going on. So there are a lot of things going on LinkedIn. It's a very good platform. You can definitely create one profile. सो बेसिक नॉलेज ऑफ गिटहब और एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल ये नेसेसरी है प्लेसमेंट के लिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी। hmm. Yeah, not placement but like better opportunities. ऐसा नहीं है कि अगर LinkedIn नहीं है तो placement नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. But हाँ, yeah, you should have one. ओके। तो मैम अगर अब आपके वॉलमार्ट के वर्क कल्चर पे बात करें तो कैसा मतलब एटमॉस्फेयर है? आपके सीनियर्स कैसे हैं? आपके कॉलीग्स कैसे हैं? कैसा वर्क कल्चर है कि हाँ बहुत प्रेशर है या थोड़ा चिल्ड आउट है इस टाइम पे? um, My life at Walmart, it is wonderful. I am not burdened with a lot of work. मुझे इतना स्ट्रेस नहीं देते लोग. It's a very good company and the work life balance is amazing. अगर मेरी 5:30 छुट्टी होती है ना, तो sometimes मैं लॉग आउट कर लेती हूँ 5 बजे भी, कोई दिक्कत नहीं है. एंड माई कलीग्स आर सुपर हेल्पफुल. आई थिंक इतनी सारी चीजें मैंने इन 3 महीने में, आई थिंक 3 मंथ्स हो गए हैं मुझे इस इंटर्नशिप में. आई थिंक मैंने 3 महीने में इतनी सारी चीजें सीखी है जो कि मैंने अपने 4 4 साल में नहीं सीखी होगी बीटेक के. So there's a lot of learning things and the learning graph is exponential. बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है. Work ethics बहुत अच्छे हैं कंपनी के. Everybody is open for help. तुम मुझे कभी भी reach out कर सकते हो किसी भी बात में. And मेरे मैनेजर भी बहुत हेल्पफुल है.
And yeah, they are really good, and they don't overwork burden me with work like कि हाँ इसको सब दे दो सारा काम दे दो नहीं नहीं नहीं. They will ask you, are you have do you have some free time, can we give like तुम्हारा sprint का monthly का इतना task तो तुम्हें देते ही हैं, but like if you have free time you can ask them कि see I am free, you can give me some more tasks and I can help you with that task or some that other project. So that's that. ये तो मैम मेरा लास्ट सवाल, एक रफ अमाउंट आपका क्या पैकेज वैकेज जो भी है, तो हमारी ऑडियंस को थोड़ा फ्यूल मिल जाए कि हाँ, Yeah. मतलब नॉट एग्जैक्ट, This is the question एक रफ everybody is अमाउंट, waiting for. एक I'm रफ sure अमाउंट. this question some wait kar rahe. Okay, so for full time, if you're an SD, Walmart offers you a rough average of 19 LPA to 37 LPA, depending on your skills and what profile are you opting for. This is the salary package for a full time employee. Yeah. ओके मैम, जो आपका डोमेन है, जो आपका आगे जाके होगा, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कौन सा डेवलपमेंट इस टाइप से. Yeah. So basically, my job profile is like software development engineer. So we work on projects, and currently I'm part of the Chile order management system. So Walmart has its retail sectors in all different countries. So उनमें से एक Chile है, like some other are Mexico, Canada. So Chile में मेरा project है, and I'm working with my team, and we are creating this order management system so that we can launch it on Chile, and वहाँ पे then customers can interact with Walmart, and जो भी उनका back end का चीज़ है, from placing an order to delivering it to the customer's doorstep. So ये जो बीच का process है ना, that's what we work on. So there's a lot of production, we have deployment, and we have development to do, and then testing is also there. क्योंकि अब तुम it's not a small scale नहीं है, it's a very large scale production thing. So बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, and there's a lot of KD section. Yeah, you have lot of learning going on. So yeah, and daily stand-ups so we have to discuss our progress. ओके तो मैम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का पिटारा खत्म हो चुका है और Yeah. काफ़ी अच्छा मतलब इंटरव्यू रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे प्लस मेरी ऑडियंस को भी. तो मैम मैं चाहूँगा कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए आप ही अपील कर दो इनसे. Okay, so everyone who's watching this video, if this video is helpful for you, please make sure to like, comment, and subscribe to Utkarsh channel. He's been a wonderful host. I really enjoyed my interview process. थैंक यू सो मच मैम, Thank you. थैंक यू सो मच.